Okay, yes, students. In the last lecture, which topic we have covered? Tell me first. Yes, fast. In last lecture, which topic we have covered? Catch memory. Yes, yes. Which topic? I cannot hear. Yes, students. In last lecture, which topic we have covered? Okay, catch memory. Yes, very good. Okay, in the last lecture, we have covered the types of memory. Memory are used to store the data. Okay, there are mainly three types of memory. Okay, the first secondary memory and catch memory. The primary memory is memory in which the currently data, okay, the data which are executing by CPU currently are stored in the primary memory. Okay, there are again two types of primary memory, RAM and ROM. Okay, yes, what is RAM? What is ROM? Who will tell? What is RAM and what is ROM, students? Yes, give the answer fast. Yes. What is RAM? What is ROM? Yes, be fast. Today we have to start this topic, types of operating system. Tell me. Which are the, sorry, what is RAM and what is ROM? Anyone knows what is RAM, what is ROM? Read only memory, ma'am. Memory, and RAM means random access memory. Okay, the data which are currently executing by the CPU, it is stored in RAM. Okay, that is RAM. Your primary memory is RAM. Okay. What is ROM? Read only memory. Okay, when your system will start, okay, when your system will start, so your operating system will load into the ROM memory. ROM, ROM memory. Okay. Modify the ROM. Okay, we cannot modify the ROM, read only memory. Okay, it is a read only memory, but the content or the data of the RAM can be accessed. Okay, why? Because if I am closing now this app and this file, the data will be removed from the primary memory. Okay, or if I am doing any changes, the changes will be saved. Okay, so RAM, the data will be modified or accessed, okay, or change you can say, but in ROM you cannot change the data. Okay, then the second type is secondary memory that we have covered. Secondary memory means the data resides in the secondary memory, will store permanently. Okay, data will be stored there permanently, but when you are accessing the data of the secondary memory, the data will be transferred from the secondary memory to primary memory. Okay, why? Because CPU executing the data only from the primary memory. That's why it is necessary. Okay, if you are storing your data in a secondary device, for example, hard disk, pen drive, okay, but when you are accessing that data, at that time, operating system will transfer that data from the secondary device to primary device. Okay, sorry, primary memory, secondary memory to primary memory. Why? Because CPU will execute the data which are stored in the primary memory. Okay, so that is secondary memory. It is non-volatile memory. Primary memory is the volatile memory. Okay, and the third type that we have covered, that is a cache memory. Okay, what is a cache memory? The cache memory is a fastest memory. Okay, the data or programs which are frequently used by the CPU or frequently executed by the CPU, that data will be stored in the cache memory. Okay, frequently accessed data or frequently executed data by the CPU, that will be stored in the cache memory. Okay, that will be, for example, after sometimes if you are not accessing that data, okay, if you are not requesting or if the CPU are not executing the data from the cache memory, then the data will be automatically removed from the cache memory. So cache memory store the data temporary. Why temporary? Because जो भी data frequently used हो रहा है, only that data will be stored in the cache memory by the operating system. Okay, CPU execute the data frequently. Okay, data of program you can send frequently, that data only cache memory. Okay, अगर वो data CPU execute नहीं कर रहा है, after the sometimes it will automatically remove from the cache memory. You can say it is a temporary buffer. You can say cache memory means buffer, temporary data will be stored. Okay, yes, that we have covered in the last lecture.
Now, then the next topic is types of operating system. Okay, types of operating system. These types are divided based on the times. Okay, means for example, when the computer was invented, okay, when the operating system was first invented, that was a batch operating system. Then in that operating system, some changes are done. Then multitasking operating system comes. Then a real-time operating system comes. Then distributed operating system comes. Then network operating system and mobile operating system. Okay, because we know our IT field is updating field. Okay, every day there are updating something. Application हो in the software. ये तो कोई system every day. Okay, if we are using the WhatsApp. Okay, now we are using the WhatsApp and Facebook, but in the background. Okay, in the background, the person who make that WhatsApp or software, they are working on that. ओके बैकग्राउंड में वो लोग काम कर रहे थे यार हम लोग उसको यूज कर रहे हैं बट दे आर always trying to add new features in that software. Okay, that's why any application or any software after this sometimes asking to us for updating that software. Okay, let's see. The first is batch operating system. Okay, the first is batch operating system. Earlier, when the computer was invented, or first time the operating system concept was come. Okay, at that time the first operating system is a batch operating system. Okay, batch operating system. What is batch operating system? This type of operating system does not interact with the computer directly. Okay, now we are using which operating system? Yes, students, which operating system you are using now? Which operating system you are using now? Which operating system we are using now? So Zoom not operating system. I am asking for the operating system. Mobile is the in mobile phones you are using the mobile operating system. Okay, yes, in mobile phones you are using the Android operating system that is made for the mobile, or you can say mobile operating system. Yes, Android. But now in system, in laptop or in the desktop, you are using the Windows operating system. Android is for only mobiles. Okay, Android is for only mobiles. Okay, now you are using the mobile. So in your mobile there is a Android operating system is mobile operating system, but in the Windows, okay, sorry, in desktops or laptops, okay, it is a Windows operating system. Wait, wait, I'll show you. Okay, so now you can see this is a Windows operating systems. Okay, this is a desktop. Okay, this is a, yes, my screen is visible. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, and now yes, yes. What happened? मैम आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है मैम, उसकी मतलब समझ में नहीं आ रही, बोलिए हम लोग के लिए समझने में आसानी है. Type in chat box. I cannot understand what you are saying. Just type in chat box. May I audible now, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now we are in computers and laptop. We are using the Windows operating system. Which operating system? Windows operating system. Okay. Currently in desktop or laptop, most of we are using the Windows operating system, and in mobile phones we are using the Android operating system. Is mobile operating system. Okay, but first time, okay, first the operating system का जब concept market में आया, okay, जब किसी ने operating system बनाया, yes, operating system is a type of system software. It is a software, so obviously software है, तो it is made by the some instructions. Okay, it is made by doing some coding वगैरह. Okay, so it is a system, software system. Okay, operating system is a which type of software system? Software system. Okay, so obviously इसको किसी ने तो बनाया, किसी ने invent किया. So when the first operating system was invented, that is a batch operating system. The first operating system market में, that is a batch operating system. कौन सा operating system था? Batch operating system. Okay, Windows तो अभी हम लोग यूज करें, मोबाइल नाउ वी आर यूजिंग, बट पहले स्मार्टफोन्स नहीं थे. ओके, सिंपल सा फोन्स थे. ठीक है, तो इन दैट बहुत सारा भी इनोवेटिव हो रहा है. तो जैसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वेंट हुआ, दैट वाज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so what is batch operating system, how it was working, let's see. So this type of operating system does not interacted with the computer directly. Okay, what
this line saying कि this type of operating system does not interact with the computer directly. Okay, there is an operator. Operator मतलब one person. Okay, who operates the system. It's called the operator. There is an operator which takes similar jobs. Okay, having same requirements and group them into the batches. Now, what is a job? What is a job? Job मतलब for example print करना है. तो printing is you call printing as a job. Scan करना है तो scan is one type of jobs. Okay, मतलब जो access करना है, जो process you want to do, that's called the jobs. Okay, having the same requirement. For example 10% उसको प्रिंट आउट निकालना है तो वो लोग डायरेक्टली सिस्टम ओपन करके प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते थे. Why? Because ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं था सिस्टम में. ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं था. ओके, वहाँ पे एक ऑपरेटर, देयर वाज वन ऑपरेटर कि वो क्या करता था कि सपोज 10% है, वो 10% को प्रिंट आउट निकालना, तो he collected the data. Okay, same data प्रिंट आउट के लिए. then suppose कोई और 10% को they wanted to do scanning. Okay, तो वो क्या करता था, स्कैन करने के लिए एक अलग जॉब. Okay, that called the jobs. Okay, which take the similar jobs having the same requirements and group them into the batches. इसमें ग्रुप करता था batches. Okay, it's called the divided. प्रिंटिंग वाला है तो प्रिंटिंग का एक डेटा एक बैच बना दिया, सेकंड स्कैनिंग के लिए उसका एक बैच बना दिया. ओके, so that is called the jobs. Printing is a one type of job. You can say task. जो task perform करना, that is called the task. Okay, it is a responsibility of the operator to sort the jobs with similar needs. Okay, वो किसका काम था, ऑपरेटर का काम था. Okay, because directly operating system जो था वो सिस्टम में इंस्टॉल नहीं था. नाउ अभी जो है आप मोबाइल परचेस करते हो तो इन दैट आपका जो एंड्रॉइड है दैट इज इनबिल्ट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता. यू कैन डायरेक्टली यूज योर मोबाइल. ओके, नाउ अभी हम लोग सिस्टम लैपटॉप परचेस करते हैं तो वी नीड नॉट टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज रेडी विथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, डायरेक्टली हम उसको प्लग इन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वी कैन यूज अवर सिस्टम. ओके, बट इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे नहीं था. व्हाई? बिकॉज दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली. द फर्स्ट इन्वेंट हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर में डायरेक्टली उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे. ठीक है, ओके, यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग था. ठीक है, वन ऑपरेटिंग सिस्टम वन अलग सॉफ्टवेयर था. ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज एक ऑपरेटर था, इन बिटवीन द ऑपरेटर वर देयर. ओके, तो ऑपरेटर क्या करता था, उसके पास प्रिंटिंग का काम आ रहा है, स्कैनिंग का काम आ रहा है, तो कुछ भी काम आ रहा है. तो सपोज प्रिंटिंग का आ रहा है तो उसने प्रिंटिंग का एक ग्रुप बना दिया कि ये डॉक्यूमेंट इसका ये सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट करना है. देन स्कैनिंग का काम आ रहा है तो व्हाट ही डिड कि वो स्कैनिंग का जितना भी काम है उसका एक ग्रुप बना दिया. देन वो क्या करता था, ऑपरेटर सबमिट ऑल दिस जॉब टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करता था. देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बैच में कन्वर्ट करके इसको देती थी एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को. इसको देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता था. ओके, तो सीपीयू इज अ डिफरेंट सिस्टम. सीपीयू इज अ डिफरेंट सिस्टम. अभी ऐसे नहीं, अभी वी हैव ओनली वन सिस्टम सीपीयू. ओके, डायरेक्ट हमने प्रिंटर कनेक्ट किया, हो गया. ओके, बट पहले ऐसे नहीं था. जब स्टार्टिंग हुआ व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इन्वेंटेड, एट दैट टाइम अलग था, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था. ठीक है, उसको अलग से काम देना पड़ता था. देन वो बैचेस में डिवाइड करके सीपीयू एग्जीक्यूट करता था दैट जॉब्स को. ओके, यू कैन सी इन दिस फिगर. ओके, देन अर्ली बैच सिस्टम प्रोग्रामर बीइंग कार्ड. ठीक है, ये कार्ड रीडर एक देयर इज वन टाइप ऑफ कार्ड रीडर था. ठीक है, आपको ये डिवाइस नहीं पता होगा. इन दैट कार्ड रीडर ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स है, ठीक है, प्रोग्रामर बीइंग कार्ड्स. ओके, ऑपरेटर जॉब कर उसने किया. ठीक है, उसको ग्रुप बनाया. ओके, देन जो ये सेकंड फिगर में, सॉरी दिस इज ए प्रोग्रामर ब्रिंग कार्ड्स. ओके, प्रोग्रामर ने क्या किया, जो भी ऑपरेटर, प्रोग्रामर मींस ऑपरेटर, उसने क्या किया, जो भी उसके क्या काम था उसने उसको एक कार्ड्स में ले लिया. ठीक है, देन सेकंड में क्या हुआ, प्रोग्रामर्स ब्रिंग कार्ड्स टू 140 मतलब एक डिवाइस था. ठीक है, वो जो बस प्रिंटिंग के लिए तो स्कैनिंग के जो भी डेटा था उसको सबमिट कर दिया सिस्टम में. ओके, सिस्टम में सबमिट कर दिया. ओके, देन ऑपरेटर कैरीज जो भी उसके पास इनपुट आया, ठीक है, उसको उसने कहाँ पे डाला, सिस्टम में डाला. ठीक है, कहाँ पे डाला, सिस्टम में डाला. ऑपरेटर कैरीज इनपुट. देन इन द डी फिगर जो ये जो सिस्टम है उसको क्या करेगा, प्रिंटिंग करना है तो प्रिंटिंग करेगा, स्कैन करना है तो स्कैन करेगा. देन अगेन ऑपरेटर कैरीज द आउटपुट टाइप. ओके, उसको निकालेगा बाहर एंड देन उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट निकलेगा. मीन दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो बीच में ना, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज आपका कंप्यूटर 1401 कंप्यूटर, 1401 कंप्यूटर. बट ये बीच में कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट वाज नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम. ओके, एंड ऑल द प्रोसेस डन बाय द ऑपरेटर. कौन करता था, ऑपरेटर्स. व्हाट इज कार्ड रीडर,
So card reader is a device for reading the data that are stored in that card. ठीक है, पहले ऐसे था. Okay, पहले at that time the computer was very in big size में आते थे, system very big size में आते थे. ठीक है, so that was operating system at that time. पहले ऐसे काम होता था, अभी ऐसे नहीं है. ठीक है, so that is a batch operating system. Okay, the problem is, see, you can see this is a ड्राइव्स, सॉरी डिवाइसेस. इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे पहले, इतने बड़े बड़े, एक रूम जितना यू कैन से इतना बड़ा बड़ा ये रहता था सिस्टम्स. कंप्यूटर सिस्टम अलग था, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, वो हैंडल करता कि क्या करना है, प्रिंट आउट करना है वगैरह. ठीक, वो प्रिंट आउट करके एक डेटा रखता था, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता था. तो अलग अलग था, सेपरेट था. ठीक है, एक में नहीं था. So that is the batch operating system. The problems with batch system are following. क्या problems are? The lack of interaction between the users and jobs. Okay, lack of interaction between user and job. Okay, what is job? Job मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालना था. ठीक है, इफ आई वांट टू डू सम प्रिंट आउट. ओके, मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा मैं एक टाइप ड्राइव में स्टोर करके दूंगी. ठीक है, एक डिवाइस में. ओके, देन ऑपरेटर को दूंगी. व्हाट द ऑपरेटर डीड, ऑपरेटर क्या करेगा, उसको ये ड्राइव में डालेगा. ठीक है, ऑपरेटर ये ड्राइव में डालेगा. ठीक है, कार्ड रीडर में डालेगा कि इसका प्रिंट आउट निकालना है. देन टाइप ड्राइव से कन्वर्ट करके अगेन ऑपरेटर क्या करेगा, वो निकाल के उसको किस में डालेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में. ओके, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, कमांड देगा. ओके, एंड देन प्रिंटर में जो सिस्टम है, उसका सिस्टम में प्रिंटर अटैच करके उसमें से प्रिंट आउट निकलता है. दैट द प्रोसेस वाज वेरी लेंथी. व्हाई? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं था. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली सिस्टम में इंस्टॉल नहीं था. व्हेन, कभी, जब, अभी नहीं. ठीक है, नाउ, अभी तो हमने जस्ट नाउ करंटली व्हाट वी आर डूइंग कि हमने प्रिंटर लेके आए, कनेक्ट कर दिया, हमने प्रिंटर्स का ड्राइवर इंस्टॉल किया, कमांड please. ओके, so that was a batch operating system. ओके, जो जॉब्स था, जो टास्क जो था, जो प्रोसेस जो था, इसको डिवाइड कर दिया. ओके, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. सिमिलर जॉब्स को डिवाइड करके एक बैच बना दिया. ओके, क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच बना दिया कि ये जो डेटा है इसका प्रिंट आउट निकालना है, ये जो डेटा है उसका स्कैन करना है, ये जो डेटा है उसको जो भी परफॉर्मिंग करना है, या तो डाउनलोडिंग है, तो जो भी रीड करना है, करेक्ट करना है, जो भी करना है. ठीक है, उसका बैचेस बना दिया, देन सीपीयू को उसको एग्जीक्यूट करने दिया. ओके, फॉर एग्जांपल अलग अलग जॉब्स आ रहे हैं. ठीक है, अलग अलग, ये पर्सन 1 का है, ये पर्सन 2 का रिक्वायरमेंट है, ये पर्सन 3 का रिक्वायरमेंट है. व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज ये पर्सन 1 को प्रिंट आउट भी निकालना है, स्कैन भी करना है, इसको भी प्रिंट आउट निकालना है, स्कैन करना है. तो व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिड, क्या करता था कि प्रिंट आउट का एक बैच, स्कैन करने के लिए एक बैच, और फिर फंक्शन उसका एक बैच बना के देन सीपीयू को देता था, देन सीपीयू एग्जीक्यूट करता था. दैट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, क्लियर? Okay, CPU is often idle. Okay, second, what is the disadvantage? The CPU is often idle because the speed of the mechanical IO device is slower than CPU. Okay, CPU को वेट करना पड़ता था. Why? CPU को क्यों वेट करना पड़ता था, क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करके नहीं देगा तब तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा. हाउ द CPU will execute it. Okay, तो वो प्रॉब्लम था वहाँ पे. ठीक है, तो दिस आर दी disadvantages. Disadvantages of batch operating system. Here, समझ में आया स्टूडेंट? Yes or no? Yes, yes. Try to understand. Okay, if you cannot understand, then again I will explain. Don't worry. Try to understand. Okay, try to understand. Okay, तो अभी हम लोग ऐसे नहीं करें, करंटली हम लोग ऐसे नहीं करें. ये फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ एट दैट टाइम. ओके, क्या था उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली सिस्टम में इंस्टॉल नहीं था. ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट था, कंप्यूटर सिस्टम डिफरेंट था. ओके, व्हाट इज द advantage of batch operating? Yes, one more is there. हाँ, CPU is because speed of the mechanical IO device is slower than CPU. Okay, difficult to provide the desired priority. Okay, अगर कोई important काम है तो वो हम उसको priority नहीं दे पा रहे. Okay, they have to wait. They have to wait. Okay, actually ना I am in college, that's why I think voice is not coming from. Okay. My voice is breaking. Okay, yes. Which are the advantages of batch operating system?
Yes, every system has some advantages and some disadvantages. Okay, so what are the advantages and disadvantages? What is the meaning of advantages and disadvantages? एडवांटेज मतलब क्या, तो उसका फायदे, ओके क्या फायदा था एंड क्या नुकसान था उसका, डिसएडवांटेज नुकसान. ओके, so what is phenomenal advantages, देखते हैं what is the advantages कि multiple users can share the batch system. ओके, एक सिस्टम है तो उसको multiple users can share कर सकते हैं. ओके, अभी कैसा है, अभी हम लोग हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास लैपटॉप है तो हम लोग एक ही उस पर काम कर सकते हैं. ओके, अवर फ्रेंड है, anyone want to use that system, उसको वेट करना पड़ता है. बट पहले ऐसे नहीं, batch operating system में multiple users can share the batch system. ओके, मैम थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका. आवाज नहीं आ रहा है. नाउ इट इज क्लियर. अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. यस, नाउ इट इज क्लियर. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, so that is the advantage. Okay, multiple users can share the batch system. Why? Because जो भी यूजर था उसको अपना जो भी काम करना था वो क्या करता था, अपना काम किसको सबमिट करता था, ऑपरेटर को. ऑपरेटर क्या करता था, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिट करता था, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बैच बना के जस्ट सीपीयू को देता था एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस. ओके, तो मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द सिस्टम. व्हाई? बिकॉज़ यूजर्स आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम. यूजर डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं होते थे, बीच में कौन था, ऑपरेटर था. यूजर हैव टू सबमिट दैट जॉब्स टू द ऑपरेटर. Okay, user have to submit that job to the operator. Okay, and then operator क्या करता था, operating system को submit करता था. So multiple users can use that, or you can say share the batch system. What is the second advantage? The idle time for batch system is very less. Okay, the idle time for batch operating system is very less because operating system always busy. Okay, जितने भी jobs आ रहे हैं operating system क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है. ओके, हाँ, बट सीपीयू क्या था, सीपीयू को वेट करना पड़ता था. क्या वेट करना पड़ता था, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सबमिट नहीं करता था कोई डेटा, तब तक सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था. सीपीयू डिड नॉट एग्जीक्यूट द डेटा, सीपीयू हैज टू वेट, ओके, डेटा फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सीपीयू को आइडल बैठना पड़ता था. सीपीयू हैव more time to wait. Okay, but operating system का उसका जो idle time मतलब क्या, free time. Idle time मतलब क्या, free time. Okay, it is very less. Yes, it is easy to manage large work repeatedly in batch system. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. मैं not audible, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है. नहीं मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम बहुत लो आ रही है बहुत. यहाँ से तो फुल है. I can hear you, but मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आप लोग की आवाज अच्छे से आ रही है. I can hear you. Okay, I will speak loudly. Okay, yes. Now second is disadvantages. What is the disadvantages? So disadvantage मतलब क्या, क्या नुकसान है. Okay, क्या हम लोग अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो क्या problems we have to face. That the problem, the first is the computer operator should be well known with batch system. Okay, why? Because between the operating system, okay, between the operating system and users there was कौन था, operator था. Okay, तो operator जो भी operators computer को use कर रहा है, operating system को use कर रहा है, it should be well known with the batch operating system. उसको पता होना चाहिए ये system कैसे work कर रहा है. अगर वो operator को पता ही नहीं है how the system is working, then how he can handle or how she can handle that system. Okay, that is a disadvantage. What is the disadvantage? The computer operator should be well known with the batch system. Clear? Then batch system are hard to debug. Okay, what's the meaning of debug? मतलब problem, difficulty, errors. क्योंकि errors आ रहा है, ठीक है, batch operating system उसको easily handle नहीं कर सकता था. Okay, why? Because it was the initial operating system. अभी उस पे काम चल रहा था. Okay, that was the first operating system. It is costly. Okay, वो costly था. The other jobs will have to wait for unknown time if any job fails. Okay, jobs have to wait. मतलब जो भी task है वो task है. For example, the first batch जो है that is for printing. Okay, तो जब तक CPU उसको print करा था, तो scanning का जो भी program से they have to wait. Okay, मतलब simultaneously work नहीं हो रहा था. Now in our operating system we can do our task simultaneously. Okay, मैं यहाँ पे for example I am taking the lecture now in the Zoom. Okay, so simultaneously I can
can also download anything from the internet. Okay, so simultaneously what are possible now in the current operating system. Windows is a multi-tasking operating system. मतलब multiple tasks when we can do simultaneously. ठीक है, आप अपना कुछ notes बना रहे हो word में, so you can hear the songs side by side. You can downloading something. ठीक है, so it is possible now. We Zoom. I am working on the Zoom. Simultaneously अपना notes भी open कर रही हूँ अगर मैंने download के लिए. मैम आपकी साउंड बहुत लो आ रही है. Yes, I am not. Wait. Wait. Now, अभी आ रही है. अब मैंने इंक्रीज किया मोबाइल में से. Connecting to mobile. Now I am audible, student. Yes or no? I am audible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Without doubt, we can again revise topic tomorrow. Don't worry. Okay, we going. किसी को आवाज नहीं आ रही तो again we will cover this topic in the next lecture. Okay. Debug. Okay. Yes. Anyone कौन है? Debug के लिए कोई मुझे पूछा तो मैम what is debug? Yes, absolutely. What is the meaning of debug? Errors. Debug मतलब क्या? Errors. Okay. What is error? For example, if you are making any mistake, okay, अगर आप कुछ mistake कर रहे हो, तो the error will come. क्या आता है? Errors आता है when you write C programming and that time you know what is debug. Debug मतलब क्या? Error. कुछ mistake हो गया तो आपका program run नहीं होगा. Okay, कुछ आपने program type कर रहे हो तो error हो रहा है या तो logic कुछ wrong है, तो errors will come. तो जो errors आता है, ठीक है, problem जो ऊपर होता है during executing the program, it is called the debug. उसको क्या बोलते हैं? Debug. अब सर clear? Yes. Okay. So these are the advantages and disadvantages of operating system. Okay. Example of batch operating system. Examples of batch operating system can use. So payroll system. Okay. Bank statement. Okay. Now bank में आप जाओ. Okay. So if you want to print your passbook, आपको print करवाना है. Okay. You want to print out your passbook, आपको क्या करना पड़ता है? You have to submit to the operator. Okay. अभी तो ATM मशीन अवेलेबल है कि हमने डाला तो रेडीमेड प्रिंट होके आता है डायरेक्ट. ठीक है, तो उससे पहले क्या था? ऑपरेटर को सबमिट किया, देन ऑपरेटर क्या करता है? उसको मशीन में डालता है एंड देन वो प्रिंट आउट होके आता है. तो बैंक स्टेटमेंट टू प्रिंट और दैट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज पैरोल सिस्टम? लेट आई विल टेल यू व्हाट इज पैरोल सिस्टम. पैरोल सिस्टम मतलब क्या कि जो हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह. ओके, दैट इज कॉल्ड पैरोल. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम है आपकी आवाज. Yes, ma'am. Because I am in college में हूँ, मैं कॉलेज से I am taking the lectures, so that's why some network issue है तो आवाज नहीं आ रही है. Okay, so we will continue in the next lecture. Okay, कि आवाज नहीं आ रही है तो we will continue in the next lecture. Clear? मैम बहुत लो आ रही है, बहुत. Continue in the next lecture, so we will continue. Okay, and I will again explain the same. Okay, ma'am. Again I will explain the whole story. So type of पहले से start करेंगे. Okay, now I am. Okay, ma'am. Okay, चलो.